Is it visible to you now? Yeah. Okay. So what's the answer for the first question? Tell me first. It is already mentioned here. So just a minute. Let me do this one again. Let's start doing this one again. So some of the questions are being solved here. So let's discuss that one. That is very simple. Here it is saying that calcium react vigorously with water. So when it is reacting, calcium oxide is reacting with water, it will give you calcium oxide plus water. It will give you calcium hydroxide plus hydrogen. No hydrogen gas will be produced. Okay. So, but this reaction is highly exothermic in nature. Okay, and that's why whenever we are just finding the two options, one is exothermic, another is endothermic. So उसी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि दो तो कोई एक रिएक्शन साथ में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इट इज नॉट पॉसिबल दैट a reaction can be exothermic as well as endothermic simultaneously. Either it can be exothermic, either it can be endothermic. So how can a reaction can be it is an exothermic, it is an endothermic? तो ऑप्शन इन दोनों में से एक होगा. Okay, अगर if it is having only one correct option. Got it? So when the two Yeah. statements in a same options in a question MCQs are contradicting each other, so in that case there can be only one correct option from that one. So next is at the time of short circuit, the current in the circuit is, the correct answer is increases heavily. Okay, because of the time of short circuit, the live wire and the neutral wire increases, and because of that the current increases, the resistance of the substance decreases and current increases heavily. Because of that, we'll simply say that. Okay. So in this reaction, it is saying only the asking for the reactant and product. So you know that reactants are always written on the before the arrow and product is always written on the left hand side. So A is the correct option. Okay. Here it is saying that a student has forgotten. वो भूल चुका है. Means he want to make hard water, but hard water is not available. Hard water is not available in the market. मतलब उसके area में available नहीं, but in the laboratory he is having. Okay. So what type of salt should he mix in order to make it hard water? Potassium and sodium are the soluble salt. They can easily dissolve. Generally form aqueous solution. They don't form insoluble scum. Okay. And hard water, you know that it generally settle down or it forms a layer. So it is having sodium and then potassium chloride, then sodium sulfate and potassium. Generally we have calcium and magnesium, but it is not, magnesium is not mentioned here. So we'll go to calcium sulfate and calcium chloride. Got it? Yes. Yeah. Okay, next one is if I'm talking here. Okay, just a minute. Structure present in the cell which is responsible for the determinations of sex of a body is chromosomes. Chromosome. Chromosomes are responsible for the determination. X chromosomes and Y chromosomes are the sex determination chromosomes and that are responsible for determining the sex of a child. Okay. Next is question number 6. It is asking for the buteanoic acid. So bute means 4 carbon. Bute means 4 carbon. Okay. And oic acid. It is saying for the oic acid. Okay. 4 carbon oic acid. Oic acid. So 4 carbon, 1, 2, 3, including the functional group. So sometimes the student get confused that the chain is this one and it is not mentioned. Sometimes they confuse with the OH group here. Okay. So you have to keep in mind that butanoic acid means 4 carbon acid. Got it? Including the functional group of the carboxylic acid. Including the functional group of the carboxylic acid. So it will be 1, 2, 3, 4. Okay. And this one, butanoic acid. Understood? Next one Yeah. is, what should be the answer for this one? Which one of the following is generally not
not generally exhibited by ionic compound. What is Electrical saying? conductivity in solid state. Electrical conductivity in solid state, electrical conductivity in the molten state. So they both are contradicting each other, na? So It B. means so इस दोनों में से एक आंसर होगा not exhibited. So B solid state में they don't conduct electricity because of the high force of attraction between the oppositively charged ions. समझ आया? Next one is this we have already been repeated. This question is repeated, so I'm not going to discuss this one again and again. Okay. Next one is in attempt to demonstrate electrolyte. Okay. So here we see that in the bulb will glow because all the conditions are fulfilled here. The battery is having negative and positive, then negative, positive, negative, positive, negative, positive. Okay, the bulb is there, switch is on. Everything is working properly. Nail is there. Okay, so and it is having Na, which is dilute solution, which has free ions to conduct electricity. So the bulb will glow. The answer is correct. Answer is 2. Okay. Yeah. Next one is question number 9. C. C. This is an NCERT examiner portion. Okay. The answer should be C. Why C? The Because reason resist. behind it, the reason behind it is that in VI graph, more the steeper the graph is, okay, the higher will be the resistance. But it should be VI. So VI graph में V यहाँ पर होना चाहिए, I यहाँ पर होना चाहिए. But इसमें ये IV graph है. तो we have to always measure the angle from the I axis से measure करना है. तो more the theta, more will be the resistance. ठीक है? तो यहाँ से measure करेंगे. तो R3 is greater than R2 is greater than R1. So it should be always measured from I. Got it? समझ आया? Yeah. So it should be R3 is greater than R2, then R1 is. So C is the correct option. Got it? Ma, you were saying B. No, I said C. You said C. Okay. Next one. Question number 10. Amoeba. 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 You're saying amoeba. In the microorganism whose nutrition is shown in the given below is. अरे यार ये कोई सवाल था. Next. A, B, C, D. What is A? A क्या है भाई? A is plumule. Yeah, A is plumule. देखो So R C. for R is radical, okay, and B is cotyledons. So it is radical, radical. You keep in mind that R for root and R for radical, the both are having, but this is a future root. Means this portion get developed into the roots portion, and this portion get developed into the stem. Okay, so this is future shoot. Future shoot. Next, this is the given below. Okay, and if the key in the arrangement is taken out, means taken out, बाहर निकाल लिया गया है, and the circuit is made open. Open का मतलब यहाँ पे close. Open का मतलब होता है कि सर्किट को बंद कर दिया गया है, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है अभी. ओके, ओपन. एंड क्लोज मीन्स डोंट थिंक दैट हम लोग क्लोज बोलते हैं ना. क्लोज क्लोज मतलब बंद करना होता है एक्चुअल में. तो बंद करना मतलब नहीं स्विच ऑफ कर दिया. ओपन का मतलब होता है दैट दी circuit there is no current is flowed, and closed circuit means the current is flowing. Keep in mind this one. Okay, so this key indicates that the circuit is closed right now, means it is working. Dot अगर है तो मतलब it is the current is flowing. But now if you are removing it, okay, in the arrangement ABCD is given to you, and the current is flowing like this way. Okay, and the magnetic field lines drawn in the horizontal paper ABCD lines are कैसी होंगी? It should be error है यहाँ से, ऐसे या तो ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी. So if the key arrangement is taken out and the magnetic field lines are drawn out to the horizontal plane ABCD, तो कैसी होंगी? So अगर हमने इसमें से की बाहर निकाली तो पहली बात तो उस वक्त तो बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, लेकिन हम लोग को पहले ही बनानी है और उसी के हिसाब से हम लोग को ड्रॉ करना है. Okay, so they generally, you know that when a current carrying wire is there, then this is an NCERT example questions. So it should be a concentric circle. Concentric circle means the circle which is having same common centers. So if you are having like this,
तो these are the concentric circles. Okay, these are the concentric circles. So इस तरह के these are the concentric circles. In a straight line, concentric circle with point O near the O, but no elliptical तो कहीं से भी नहीं होगी हमेशा ही. It should be concentric circles की फॉर्म में. समझ आया? Yeah. Next is question number 13. Which of the following statement is not correct about the magnetic field? C. So you're saying C for this one. इसमें always अच्छा which of the following statement is not correct? सबसे पहले तो not correct ऊपर about the magnetic field lines. So magnetic field lines ऑप्शन डी। forms continue. आयशा आ गई क्या? ओहो. Magnetic field lines forms a continuous closed curve. Magnetic field lines forms a continuous closed curve. Continuous closed curve का मतलब क्या होता है? देखो, continuous का मतलब होता है कि that the ray that the like this is north pole, this is south pole, and they are moving like this. यहाँ से निकली और ऐसे ये ऐसे फिर से साउथ पोल में एंटर करेगी और फिर से दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड. तो ये क्लोज्ड कर्व भी तो है. कर्व्स मतलब जो चीज कर्व नॉट स्ट्रेट. समझ आया? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ कंटिन्यूस भी होती हैं और क्लोज भी होती हैं और कर्व्स भी होती हैं. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, मतलब सही है. मतलब ए को तो हम लोग चूज नहीं करेंगे. ओके. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी बात सही है. आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस outside the magnetic field go from south to north. नहीं, नॉर्थ से साउथ होता है, यही ऑप्शन गलत है. समझ आया? Outside the magnetic field lines goes from south to north. No, it goes from north to south. Inside it is south to north. Okay. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following what is the correct? C. C. Correct. So C कैसे? C. हाँ, न्यूरॉन से डेंड्रॉइड, डेंड्रॉइड से सिनेप्टिक टर्मिनल्स, फिर सिनेप्टिक टर्मिनल से फिर से ऐसे. सही है. ये चीज यहाँ पर, ये चीज कैसे गलत हो गई है? क्योंकि ये उल्टा है इसलिए गलत हो गया. इसमें ये भी उल्टा हो गया और इसमें ये ऐसे गलत हो गया. तो इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. अरे ये क्या है भाई? द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज एनी इज डायग्राम शो. अरे यार, यहाँ से ही है डायग्राम, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है. 2 and इसमें 3। ये एरर है. द डायग्राम शो द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ. नो सेल कंटेंट आर शोन हियर. Which of the following cells normally contain chloroplast? Which part? 2 and 3। फर्स्ट एंड सी। देखो, ये जो है ऊपर की, ये है ऊपर की लेयर, लेकिन इनको बोलते हैं हम लोग पेलिसेड पैरेन्काइमा. एक होती है हमारे पास, देखो ये और ये. एक्चुअल में जो लार्ज नंबर ऑफ वो होता है क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होता है, वो इन पेलिसेड मेसोफिल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉल्ड पेलिसेड पैरेन्काइमा. ऊपर तो हो गई हमारे पास अपर एपिडर्मिस. दिस इज अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस. ओके. और एपिडर्मिस. अब सुनते रहना ध्यान से. उसके बाद नीचे हमारे पास स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है. स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ये हमारे पास पेलिसेड 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 पेरेन्काइमा, और नीचे होता है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा. स्पॉन्जी, ये दोनों पेलिसेड एंड स्पॉन्जी मिलके बनाते हैं मेसोफिल टिश्यू. मेसोफिल फिल टिश्यू. और मेसोफिल टिश्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब दे आर वेरी रिच इन क्लोरोप्लास्ट. दे जनरली प्लेस दे हैव रिच सोर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके. उनके अंदर बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है मेसोफिल टिश्यू के अंदर. मेसोफिल टिश्यू आर रिच इन, दे आर ग्रीन इन कलर. तो जनरली पेलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा. बट यहाँ पर ये जो 3 है ना, ये जो 4th और 5th की जो लाइन है ना, अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे इसने जो 3 दे रखा है वो फिर नीचे कौन सा आ गया है? नीचे आ गई है लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस.
और लोअर एपिडर्मिस के नीचे तुम देखोगे ना, ये फोर्थ जो लाइन है, ये जो फोर्थ है, नीचे एक फोर भी ऐसे देखोगे तो ये फोर है। और ये कहाँ तक जा रहा है, ये गार्ड जा रहा है गार्ड सेल तक, ये गार्ड सेल्स है, ये ज्यादा गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल के अंदर टिश्यू वो होता है, ठीक है। मतलब गार्ड सेल्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट, मतलब उनके अंदर दे आर द एपिडर्मल सेल्स एंड दे हैव गार्ड सेल्स में मतलब टिश क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ओके, सो विल गो विद दी 1 एंड सॉरी 2 and 4, 2 and 4 में जाएंगे। समझ आया? जब इन्होंने Yes. यहाँ पे दे ही नहीं रखा, ये सब दोनों ही, इनको टू को इसने कंसिडर किया है पेरेन्काइमा टिश्यू यानी मेसोफिल टिश्यू, ये दोनों को इसने एक ही कंसिडर किया है, टू को ये पूरा एक तरह से। इसके बाद नीचे जो है हमारे पास, ठीक है, तो no cell content are shown here. So diagram show the arrangements of inside the leaf are green plants. Which of the following contain normally cell contains chloroplast? So yes, guard cells 2 and 4. Done. समझ आया? Yes. उसके बाद नेक्स्ट, and this one हुआ। It is plus Hmm? 100. So this one is very simple. This we have already discussed. देखो, ये रिएक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन इस तरह से, कई बार हम लोग को अगर, ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा है तो हम लोग कौन से वाले मेथड में आएंगे, एलिमिनेशन रूल वाले पे जाएंगे। एलिमिनेशन मतलब जो हमें पक्का पता है कि ये गलत है, हमें ये नहीं पता कि कौन सा सही है। सपोज करो ऐसे भी तो सकता है कि हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा सही है। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट विच वन इज करेक्ट, सो विच विल डू डील विच इज 100% इनकरेक्ट। सो मान लेते हैं कि ये रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वी गेट ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट एंड ही आर गेटिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वी हैव एन एसिड एंड बेस रिएक्शंस, एसिड एंड बेस रिएक्शन। सो एसिड एंड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये भी एसिड और बेस तो है नहीं है। मान लेते हैं ये पानी में आने के बाद बेसिक बिहेवियर को शो करती है NH3, बट यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं, गैसियस फॉर्म में इट इज नॉट, एक्वस फॉर्म पानी में भी नहीं है। सो यहाँ पर तो ये शो नहीं करेगी बेसिक बिहेवियर। ऑक्सीजन तो सिंगल एलिमेंट है, एलिमेंट कभी एसिडिक और बेसिक होता ही नहीं है, पानी में जाने के बाद वो शो कर सकता है ऑक्साइड की फॉर्म में, बट नॉर्मली डज नॉट शो। तो विल से दैट दिस इज नॉट a neutralization reaction. So and we have to choose more than one correct option, so we'll go 1 and 3, eliminating 2 and 4. Okay, got it? Yeah. अब बताइए कि Yes. ये क्या मैंने ये जो असर्शन एंड रीजन चूज किए हैं क्या ये सही है? इनके ऑप्शंस, जैनब, हर्षित, अब्दुल कबीर, जियाना, आयशा, एवरीवन प्लीज टर्न ऑन अ कैमरा, प्लीज टर्न ऑन कैमरा एंड लेट मी Yeah, नो। it's 17 minus 2. इट इज, A. यू सेइंग इट्स ए, बोथ assertion and reasons are true and reason is the correct explanation for assertion। कैसे? सही जवाब है ये, क्योंकि उसने बोला कि कोरोजन जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तभी तो हम लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम वी आर जस्ट स्पेंडिंग मच मनी। Otherwise, if it is not a problem, then why should we spend money over it? Okay. Every year, enormous amount of money is spent on damaged iron. So A is the correct option. समझ आया? Yeah. Second, why it is B correct? क्यों B correct है? Because reason अच्छा, is not related to the assertion, right? हाँ, उसने कहा है कि क्वेश्चन में ही इज सेइंग दैट डोमिनेंट एलील, एलील मतलब ट्रेट, dominant trait is a trait whose phenotype is expressed. We know that dominant trait is expressed as phenotype. Phenotype मतलब physical appearance. जैसे tallness is dominant trait as over the dwarfness. तो इसलिए हमें in heterozygous condition when it is capital T and small t we get a tall plant. Okay, because the
टॉलरेंस इज डोमिनेंट ओवर डार्कनेस, और हमने इसको रिप्रेजेंट भी किया कैपिटल टी से, लेकिन रीजन क्या है व्हाई इट इज डोमिनेंट, वो है तो है, देयर इज नो रूल, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों ऐसा होता है. सो दैट्स व्हाई हियर assertion and reasons both are true. Dominant trait को भी represent with the capital letter, and the recessive trait को भी represent with the small letter. But it is not explaining, the reason is not explaining that why the dominant trait is shown as phenotype. What is that reason behind? That's why B, both assertion and reasons are true, but reason is not the correct explanation for the. समझ आया? इसके Yeah. बाद नेक्स्ट, क्या ए सही है? मैग्नेटिक फील्ड जो डिपेंड करता है वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. एन इज द नंबर ऑफ टर्न, आई इज द करंट. यहाँ पे लेंथ का कोई लेना देना नहीं है. क्या ये सही है? अच्छा अभी तुम 19 कर रहे हो ना, 19 करो पहले. हाँ, टू द 19th वन. 19 is true. A. ऑल प्लांट्स possess ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सारे प्लांट्स में ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर क्लोरोफिल इन दैम. अब तुम कहोगे कि सर ऐसा तो नहीं है कि ग्रीन कलर सब में प्रेजेंट होता है, देयर आर आल्सो लाइट ट्रैफिक पिगमेंट्स, और नॉट ऑल प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर्स, एंड इट इज मेंशनिंग. और तो बेटा थोड़ा बारीकी पे नहीं जाना है. समझ आया? Generally, we generally treat that when we are just studying about the Mendel's dominant trait and the recessive traits. During that time, we are जब हम लोग करते तो for every 4 plants we get 3 plant as tall and 1 plant as dwarf. अब वो कर कह दे कि अगर हमने 400 प्लांट लिए तो 400 में से होने चाहिए 300 टॉल और 100 डॉर्फ होने चाहिए. Sir, your mic is mute. ओके. तो अगर वो ऐसे कर दे तब भी वो परफेक्शन माना जाएगा. समझ आया? तो ऐसा नहीं होगा कि 100% की फॉर एवरी 300 देयर शुड बी 300. अगर वो ऐसे बोले 295 और 105 और कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, द नियरेस्ट ऑप्शन दैट शोज 3:1, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. समझ आया? ओके. कि अगर उसने 400 प्लांट्स को ट्रीट कराया एंड ही इज फाइंडिंग द रेशियो एज 295:105, so it is approximately 3:1. Got it, Aisha? Yes. So next one is 20. The magnetic field produced by a current carrying solenoid is independent on the length and the cross section area. बोलो क्या जवाब होगा इसका? दो इंपॉर्टेंट है, देखो सुन. B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है, ये बात सही है कि यहाँ पर लेंथ को कोई नहीं दे रखा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न जो है वो लेंथ भी तो इंक्रीज करता है ना. एक टर्न आप ले लिया, उसके बाद फिर एक और टर्न, फिर एक और टर्न, फिर एक और टर्न, इस तरह से. तो व्हेन वी आर जस्ट, तो एक्चुअली द नंबर ऑफ टर्न इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी एक लेंथ में कितनी कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है. इफ यू आर कीपिंग लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे है, इस पर आपने 100 टर्न दे दिए और उतनी ही लेंथ में आपने 50 टर्न दिए, तो डिपेंड करेगा ना नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. तो एक्चुअली दिस इज पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है. ओके, गॉट इट? So the magnetic field produced by a current carrying solenoid is independent on length and cross-sectional area. No, it depends on the length and cross-sectional area. अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग बड़ी मैग्नेट बनाने के लिए, कोई बड़े स्पीकर्स बनाने के लिए, बड़ी चीज बनाने के लिए हम लोग बड़े एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करते. एंड वी आर नॉट जस्ट फाइंडिंग इट नंबर ऑफ टर्न्स. ऐसे नहीं, छोटी मैग्नेट बनाओ या बड़ी मैग्नेट, दे शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, so it is dependent on length and cross-sectional area. Okay, so assertion is, क्या है assertion false कैसे हो गया भाई? अच्छा, अच्छा इंडिपेंडेंट बोला ना, इंडिपेंडेंट. ओके, it is dependent. Okay, okay, next one is R. Just a minute.
What is the name of that gas? Tell me fast. H2A. It is simple hydrogen gas, H2. Hydrogen gas है. Name the method of collection of gas. Method क्या है? Method is inverted flask or removing air. Removing air यानी यहाँ से आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती रहेगी, इसमें से एयर रिमूव होती जाएगी और हाइड्रोजन ऊपर कलेक्ट होती जाएगी. ओके. तो इन्वर्टेड कैपिलरी मेथड भी आप लिख सकते हैं. गॉट इट. List Okay. any two observation when highly reactive metal is dropped in water. Highly reactive metal is dropped in water. The metal will come at the top because of the production of H2. Yes, you can say it will start floating. Highly reactive metal, it will produce its hydroxide. Generally, the highly reactive metals forms hydroxide, metal hydroxide plus hydrogen gas. If it is highly reactive metal, then the heat, since this reaction is so exothermic, that the heat liberated out during this reaction may let the hydrogen gas to catch fire. Okay, समझ आया? So it may let the hydrogen gas to catch fire. Are you getting my point? Okay. Yeah. तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो आग पकड़ सकती है अगर हीट की वजह से, और जनरली सोडियम एंड पोटेशियम के केस में ऐसा होता है. Okay, done. What is mean by diffusion? Diffusion से क्या समझते हैं आप? What do you mean by diffusion? Movement of water from a region of higher concentration to a region of lower concentration. हाँ. The movement of any substance or the whole solution from the region of higher concentration to the region of lower concentration without any semi-permeable membrane. Osmosis में semi-permeable membrane होती है, and there is a transformation of only the solute, not the solvent. Sorry, on only the solvent and not the solute. तो ये difference है. Diffusion is just only the transformations of substance. We will use the whole substance mixtures from a region of higher concentration to the region of higher concentration to the region of lower concentration without any semi-permeable membrane. बिना किसी membrane के. Okay, without any membrane. आएगा नहीं क्वेश्चन, ऐसा छोड़ दे रहा हूँ. What is which are the first simple molecule produced by food produced during photosynthesis? Which are the first simple molecule of food produced during photosynthesis? Glucose. Glucose. Glucose बनता है simple. Okay. What happened to the simple molecules in the leaves later? It will get transferred throughout the plant by phloem. Then these simple molecules are being transported to different storage organs with the help of conductive tissue called phloem. What do you mean by the term assimilation? Absorption of Assimilation. food by water and absorbed by the large intestine water and get out of the anus. Using nutrition for various हाँ, ऐसा things. सकता है. Assimilation is simply utilization of digested food. Utilization of digested food. Okay, that is called assimilation. Actually, it is utilization. Any confusion, Maha? No. Okay. Draw a neat diagram to show the refraction of light through a glass prism. उसमें angle of incidence और angle of deviations को represent करना है. कर दोगे? Yeah. Yes. उसके बाद है what is scattering of light? Explain with the help of example. Scattering means
When a light fall on a particle, then it is scattered in all the direction. This splitting, एक तो होता है splitting of light into 7 colors. That is called dispersion. Splitting of light. Splitting of light into 7 color is called dispersion. और अगर हम लोग बात करें स्कैटरिंग की, तो स्कैटरिंग क्या है? जैसे मान लेते एक पार्टिकल है, when a light rays comes and it's scattered in all the direction. So scattering means, what you will write the definition for the scattering? What is the definition? What could be the definition for the scattering? क्या प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे? When beam of light gets scattered in the atmosphere due to स्कैटर तो वर्ड यूज ही नहीं करना, क्योंकि स्कैटरिंग की तो हम लोग बात ही कर रहे हैं ना, तो स्कैटर वर्ड क्यों यूज करेंगे हम लोग? जैसे अगर हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो व्हेन द लाइट गेट रिफ्रैक्टेड, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे डेफिनेशन। तो स्कैटरिंग प्रॉपर डेफिनेशन के लिए एक मिनट को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट comes in contact with different molecules in the air and splits to different Definite. directions. And the process in which the light get dispersed in all the surrounding, all the surrounding due to small tiny particles. Note it down, please. This is a definition for the scattering of light. Please note it down. The process in which light get dispersed in all the direction due to small tiny particles. This, because of that, we are able to see Tyndall effect. We are able to see the blue color and the red color of the sky is shown by this one. And yesterday we also discussed the sun. During the sunset and sunrise, then that time the red color of the sun, the highly red color of the sun during the sunset and sunrise time, this is due to the scattering phenomena. Okay. Done. Note this one also. Sir, so red color of the sun is not due to atmospheric refraction. No. Well, means if we have to choose one option, रिफ्रैक्शन तो हो गई होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एटमॉस्फेयर में कोई लाइट आए तो रिफ्रैक्शन ना हो। रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल, रिफ्रैक्शन विल बी देयर। बट इफ आई आस्क यू दैट, अगर मुझे चूज करना हो कि सन रेड जो है वो क्यों दिखाई देता है सनसेट और सन टाइम के टाइम में, मुझे अगर मैं ऑप्शन चूज करूँ कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट चूज करूँ, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 color, या फिर मैं चूज करूँ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो आई विल गो थ्रू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, व्हेन आई हैव टू चूज वन ऑप्शन, जब मुझे एक ऑप्शन चूज करना होगा कि सन क्यों शाम में रेड दिखता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ आया? Yes. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज, just a minute. State which of the following chemical reactions will take place or not given, कौन सी वाली होगी बताओ फटाफट से। which of the following will take place, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये तो हो जाएगी। आयरन इज लेस रिएक्ट, ये नहीं होगी सेकंड वाली एंड जिंक व्हेन रिएक्ट विद आयरन, जिंक इज मोर रिएक्टिव, ये भी हो जाएगी। ओके, सेकंड वाली विल नॉट टेक प्लेस। रीजन, बिकॉज रीजन इज सिंपल, यू कैन नो द रीजन। नेक्स्ट वन इज गिव रीजन, शाइनिंग सरफेस ऑफ मेटल बिकम डल, क्यों होता है? due to Corrosion oxidation reaction. हाँ, बिकॉज ऑफ द कोरोजन। Contact with the बिकॉज, हाँ आप इसको सही से लिखो रीजन की, बिकॉज द मेटल्स व्हेन कम्स इन द कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस, it combines with that and forms a dull layer which we call corrosion. Okay, so corrosion की वजह से
because of corrosion. Aluminium is extracted from its ore by the electrolysis of molten ore. Aluminium को क्यों उसकी ore से निकालने के लिए, for example Al2O3 है हमारे पास, तो we use first molten ore in the, जिसमें ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट की rods होंगी, और यहाँ पर हम लोग Aluminum molten lies air. in the higher reactivity series. Yes, because aluminium is highly reactive metals. एंड अदर अगर हमने सपोज करो इसको यूज भी किया, राइट, फॉर एग्जांपल हमने Al2O3 ले लिया और उसकी रिएक्शन हमने सोडियम के साथ करा दी और इसने हमें सोडियम ऑक्साइड दे दिया, तो फिर भी मोर रिएक्टिव सोडियम ऑक्साइड तो फिर भी नहीं मिलेगा हमें, सोडियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस एल्यूमिनियम इन द लिक्विड स्टेट, लेकिन फिर हमारा जो सोडियम ऑक्साइड है वो वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज अदर मेटल्स दैट आर अबव सोडियम अबव एल्यूमिनियम दे आर मोर एक्सपेंसिव देन द एल्यूमिनियम, तो इट विल नॉट बी इकोनॉमिकल फर्स्ट। अगर हम लोग किसी दूसरे मेटल से रिएक्ट करा भी दें रिडक्शन विच आर मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, सो दैट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव, एंड सेकेंडली कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे, और एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, सो इट कैन नॉट बी रिड्यूस विद द कार्बन, कार्बन नीचे आता है। अगर हम रिएक्टिविटी से इसको लिखे, पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पर मैंने मैग्नीज और क्रोमियम भी डाला है, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों की ऑक्साइड यानी कि यानी MnO2 को अगर हम लोग एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराते हैं तो इट विल गिव्स यू Mn प्लस Al2O3। इसी तरह से क्रोमियम की अगर हम लोग कराएं ऑक्साइड की फॉर्म में तो वो दोनों एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके हो जाते हैं। बट हियर वी हैव कार्बन लाइक आयरन, आयरन, जिंक, आयरन, टिन, लेड। डन। Yes. Gold is available in the native state because it is unreactive metal. Very Simple. least reactive. It is Least reactive unreactive. metal. Unreactive or least reactive metal. Mention the three kinds of cells present in the blood. WBC, RBC, RBC, and WBC, And plasma, platelets. platelets, plasma is not a blood cell. Lamb. Platelets. RBC, WBC, and platelets. platelet. Right? One function of each. RBC is used as means for defending the. Present is Transportation of hemoglobin. It oxygen, is right? present as well. हाँ, हाँ, yeah. Blood clotting the platelets. WBC protect us from foreign invaders. Okay, they act as the soldiers of the Bacteria. body, and WBC, sorry, RBC help in the transportations of oxygens with the help of hemoglobin. With the help of diagram, explain the exchange of gases. अच्छा, किस किस बच्चे ने अभी तक हार्ट का और एक्सक्रीटरी सिस्टम, हार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके, एंड नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन, इनके डायग्राम प्रैक्टिस नहीं किया? यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम्स। जो बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे को तो आता है मैं बना लूंगा, नहीं, आपसे नहीं बनेगा। यू हैव टू गिव द टाइम, पहले बना के देखो। ओके, so excretory system is the topmost. After excretory system we have the double circulatory system, second topmost. Third topmost is the neuron and the nephron, in दोनों के diagrams. Okay, so these are the very important diagrams in the bio 10th standard. उसके बाद मंजू, मंजू is a, sorry, is use cases क्या हो गया? Manju uses a concave mirror for the formation of different position of the object. What what interference can be drawn by the falling object? अगर वो 10 सेंटीमीटर पर from the pole पर of a concave mirror and the focal length is 15, बताइए। अगर focal length 15 है तो क्या होगा? कैसी तरह की उसको इमेज में देखें? ऑब्जेक्ट को रखा है 10 पर, क्या बोलिए? अगर 10 पर फोकल लेंथ हमारे पास, Image will be formed behind the yes, image will be formed behind the mirror. Focal length is 15. So object तो 10 पे रखा हुआ है, तो यही कंडीशन होती है when object is placed between fold and focus, will be then image will be formed enlarged, behind, enlarged and behind virtual the and mirror. erect. Yeah, the size of the image. So size of the image में लिखेंगे हम लोग, it will be enlarged. Position of the image behind the mirror, behind the mirror. Okay, size of image, जल्दी बोलो।
enlarged, एनलार्ज नेचर Enlarged. ऑफ द इमेज वर्चुअल और डायग्राम बना दोगे, प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद डिफाइन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। ऑप्टिकल सेंटर जहां पर प्रिंसिपल एक्सेस और अपर्चर, दिस इज कॉल्ड अपर्चर, आपस में मीट करते हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और द रे, or we can say that the point from which there is no uh, bending of ray take place, the point from which if a ray is passed and it passes through the lens without any deviation, without any bending, we called it optical center of a lens. तो दो जगह पे आप इसका डेफिनेशन दे सकते हो ऑप्टिकल सेंटर की। वन इज दैट द पॉइंट वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द अपर्चर intersect is called optical center, and the point where the ray, if the ray is passed through that point, it do not bend, it do not deviate, it do not, okay, so bending नहीं कर रही है, डाइवर्ज नहीं कर रही है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, we call it optical center. Okay, got it? You are being given a convex lens of focal length 30 centimeter. Where would you place the object to get a real inverted image and highly enlarged? Highly enlarged बताइए। बोलो। Beyond C. highly Between enlarged, center. highly enlarged F1 and optical center. at F, at f। अगर आप if you put anything at f then फिर वो क्या देगा बोलो। हम्म highly enlarged में एट फोकस पे अगर आप रखते हो तो हाईली enlarged इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। और अगर इन्फिनिटी पर है, बिल्कुल हाईली डिमिनिश इमेज चाहिए, हाईली डिमिनिश, देन यू पुट द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। समझ आया? नेक्स्ट इज पवन is connected a galvanometer. Pawan connected a galvanometer with a coil of insulated copper wire. What would happen if bar magnet is pushed into the coil? अगर बार मैग्नेट को लेके आओगे, insulated copper wire coil बनाई है उसने, तो if you put a bar magnet, then the deflections in the galvanometer will be seen. Okay, जैसे ही यहाँ पर coil है और coil है, इसके अंदर आप बार मैग्नेट लेके जाओगे नॉर्थ पोल साउथ पोल, देन गैल्वेनोमीटर के अंदर आपको एक करंट मतलब डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। is pushed into the coil, withdrawn from inside, बाहर निकालोगे तब भी मिलेगा, लेकिन हेल्ड स्टेशनरी पर नो चेंज, नो चेंज। जब आप अगर मान लेते गैल्वेनोमीटर की निडल ऐसे है, अगर पुश करने इफ यू आर जस्ट व्हेन यू आर एंटरिंग इट, if it deflected to this direction, so when you reverse it back it will deflected opposite to that direction. समझ आया? because the direction current is reversed, and when you held it stationary तो फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, because change in the magnetic field when you are pushing the down and when you are extracting out the bar magnet, then during that time the change in the flux is obtained, mean magnetic field में change आ रहा है, जब magnetic field में change आता है तभी फोर्स जनरेट होती है। ओके, मतलब कोई फ्लक्स यानी करंट प्रोड्यूस होगा। करंट कैन ओनली प्रोड्यूस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स। सो फ्लक्स में चेंज कब आएगा? जब व्हेन वी आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट। ओके, गॉट इट? सो हियर विल बी नो चेंज, here will be the deflection will be seen, and here will be the deflection will be seen. समझ आया? yeah, Yes or no? You are given two identical looking bars, just two bars. How will you identify whether any or both of them is a bar magnet? आपके पास दो आइडेंटिकल आयरन की बार्स हैं, इनमें से आप कैसे पहचानोगे? तो बकवास का क्वेश्चन हो गया भाई। जो मतलब क्या ही कैसे पहचानोगे यार? सिंपल से आप रख लीजिए किसी sort the आयरन, note
ये क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ कैसे होगा ये वाला। देखो जब भी मैं अभी बोल देता हूँ, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉइक एसिड और एस्टर है। तो O2 जब भी आएगा, O2 किसी एक कंपाउंड में, CnH2nO2, जनरल फॉर्मूला CnH2nO2, इट इज द फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज एस्टर। समझ आया? अब एस्टर्स तो हम लोग यूज नहीं करते हैं बिकॉज इट इज नॉट, बट सिर्फ बट वी यूज acetic acid for as a preservative. So यहाँ पे कह रहा है inorganic compound A is widely used as a preservative in pickles and So has molecular ethanoic formula. acid. It will be ethanoic acid. सिंपली बात हो गई कि भाई ये दो कार्बन का जब भी O2 आए, CnH2nO आए खाली O, तो it will be the aldehyde और ketone. Compound B will be ester. Compound B will be ester. Compound A is ethanoic acid और compound B क्या होगा? That would be, अगर ये इथेनॉल के साथ टैग करें, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज सेइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज वाइडली यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव में, दिस इज व्हेन रिएक्ट विद इथेनॉल। तो दो कंपाउंड यानी CH3 COOH व्हेन रिएक्ट विद C2H5OH, क्या देगा ये देगा CH3 COO प्लस C2H5, इथाइल इथेनॉइड देगा प्लस। ओके, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर्स, की प्रेजेंस में होती है। अभी कह रहा है क्वेश्चन में, राइट डाउन द रिएक्शन लिख दी, हाउ विल यू गेट कंपाउंड ए फ्रॉम बी, यानी एस्टर, ये कंपाउंड ए यानी ए आपको यानी एसिटिक एसिड क्या कब मिलेगा अगर आप बी से रिएक्ट कराओगे, बी से यानी एस्टर से आप तो कैसे कर सकते हो? तो पहले आपको इथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करा करके पहले सोडियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है। और फिर आप इसको HCl से ट्रीट कराओगे तो देन इट विल गिव्स यू CH3COH प्लस NaCl। समझ आया? Yeah. So write down how will you get ethanoic acid from ester. How will you get respective carboxylic acid from ester? Done? Noted? Yeah. Yes. Next one is, आगे पूछ रहा है कि which gas is produced when compound A react with washing soda, बताइए। Compound A is treated with calcium ethanoic acid. Compound A is carboxylic acid ethanoic acid. When ethanoic acid reacted with washing soda, क्या जवाब होगा? H2. कौन सी गैस होगी? H2। क्या हो गया तुम सबको? Why not responding? Why? What is the formula for the washing soda? Sodium carbonate. कार्बोनेट ग्रुप आया ना, कार्बोनेट ग्रुप से क्या मिलता है? We get carbon dioxide. Yeah. Whenever any acids react with any carbonate, it will gives you carbon dioxide and water plus salt. तो गैस की बात तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया ना, CO3 group. If you have CH3COOH, when you are treating it with NaHCO3 or Na2CO3, कोई भी हो, वॉशिंग सोडा हो या बेकिंग सोडा हो, कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। ओके, Na2CO3 हो या फिर NaCO3 हो, NaCO3 हो, Na2CO3, then what it will gives you? It will gives you CH3COONA, sodium ethanoate plus CO2 plus water. So gas will be ethanoic acid, gas will be carbon dioxide.
the formula of an ester is this one, which write the structural formula of the corresponding alcohol and carboxylic acids. आसान हो गया. ये जो पोर्शन होगा O के बाद, that will gives you the alcohol. तो 2 कार्बन का अल्कोहल कितना क्या होगा बोलो? What is the name for 2 carbon alcohol? ethanol, Ethanol. And the 2 carbon, ये जो पीछे वाला पोर्शन होगा, that portion will be this ethanoic portion. acid, This portion will be ethanoic acid. Okay, so this is ethanol. This one is ethanol and come here. This one is ethanol, C2H5, and this one is ethanoic acid. अगर मैं पूछूं ऐसे, बताइए इस रेस्पेक्टिव CH3, COO, C3S7. Write the name of alcohol and corresponding carboxylic acid in this ester. क्या नाम होगा? और इस कंपाउंड का नाम भी बताओ क्या है? propanoic acid plus and then ethanol will be propanol, प्रोपेनोइक एसिड क्यों होगा? Why it will be propanoic acid? 3 carb, Where are the 3 carbon? Where are the 3 carbon? You check it. ethanoic acid. This will be the group that will gives you the alcohol. So that will be C3S7OH. The name of 3 carbon alcohol is propanol. Propanol. And this would be the 2 carbon carboxylic, including the functional group. So it will be ethanoic acid. Ethanoic acid. Understood? CH3COOH लगा दो बस इसका ये. Okay. Got it? Clear? Yes. So that is the way that. अच्छा चलो मुझे बताओ जरा ये एक और चीज बताओ मुझे. अगर मैं लिखता हूँ C2, if I'm writing C2H5OH, sorry, if I'm writing C2H6O and if I'm writing C2H4O, ये कंपाउंड कौन सा हो सकता है? ये कंपाउंड कौन सा हो सकता है बोलो? आपके सिलेबस में ये कंपाउंड कौन सा हो सकता है? ये कंपाउंड कौन सा? और इफ आई एम राइटिंग C2H4O2, ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड सी है. बोलिए. ये कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? Ethyl, the first. Ethyl alcohol. इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल. एक्चुअली CnH2n+2 और O करके अगर हो तो ये फॉर्मूला होता है, यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका डबल करो फिर 2 ऐड करो. ये जो एल्केन का फॉर्मूला होता है और सिंगल O. एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 होता है. बोलो अगर मैं बोलता. Okay, so that one is actually the one hydrogen of this one. Actually the formula is C2H5OH, but this H is added here. समझ आया? Got it? Yeah. Yeah. CnH2n, ethene, then single O. यानी जो हमारे पास एल्कीन का फॉर्मूला था, एल्कीन. This is the formula for alkane. When we are having carbon, double of carbon then +2 is alcohol. But aldehyde and ketones have double bond O, double C double bond. But in alcohol we have COH, single bond with carbon. So that's why यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो कम होते हैं. और ये एल्डिहाइड ही हो सकता है क्योंकि इसमें 2 कार्बन है. समझो ध्यान से. C2H4O, it is a ethanol. CH3 C double bond OH. This is 1 2 3 4 hydrogens, 2 carbon and 1 oxygen. It is ethanol. Ethanol. And this is double oxygen में it is ethanoic acid. Ethanoic acid. लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूं, if I am writing this one C3S6O, तो अब ये 3 कार्बन का हो गया है. अब इट कैन बी एन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन. इट कैन बी 3 कार्बन एल्डिहाइड CH3, CH2,
CHO. Count the total number of carbon. 1, 2, 3, 3 carbon. 6 hydrogen, 3, 2, 5 and 1, 6. क्योंकि कीटोन कम से कम 3 कार्बन का बनता है, तो if we have 3 carbon here, then it can be a ketone as well as aldehyde, right? Like you can check it. You can check it. C double bond O and then CH3 and then CH3. It is propanone. The compressed formula is C3H6O. Are you getting my point? समझ आया? Yeah. So C3H6O can be an isomers of two functional group having one aldehyde and second is ketone. लेकिन अगर C2H4 हो यानी डबल कार्बन का, और ठीक है एग्जैक्टली पहचानना है यहाँ पे, अगर दो लग होते हैं ऑक्सीजन तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड। समझ आया? इफ आई राइट C3H6O2 देन इट इज प्रोपेनोइक एसिड। या 2 कार्बन या 3 कार्बन का एस्टर भी हो सकता है, लाइक इथाइल मिथाइल इथेनॉइड CH3 COO CH3, it is methyl इथेनॉइड। CH3 is methyl group ना, तो मिथाइल इथेनॉइड। 1 2 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। थोड़ा ध्यान से करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम में क्वेश्चंस करोगे तो यू विल बी हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस वन। डोंट गेट कंफ्यूज, हम लोग एक एक्स्ट्रा लेवल गया हूं मैं भी, ठीक है कि ये 37 क्वेश्चन तुम कर लोगे, इसमें कौन सा रिएक्टिव है कौन सा नहीं है, जस्ट इजी। ओके एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये भी कर लोगे। अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, ये जरा मुझे बताओ। आर यू सेइंग समथिंग? एनीबॉडी इन द क्लास? क्या माँ? Yes, look at this here. So if I'm talking about this one, just look at this, please. Here we have this one, nitric acid, calcium and nitric acid. And I have told you earlier that calcium do not react with nitric acid to produce hydrogen gas. Other acids, it can produce hydrogen gas with H2SO4, it can produce with HCl, but HNO3 के साथ नहीं होगा. Only the magnesium and manganese are the two metals that can produce hydrogen gas with the reaction with nitric acid. So what happens when calcium is going to treat with HNO3? It will gives you calcium nitrate plus NO2 plus water. समझ आया? Yeah. So there will be no production of hydrogen gas will take place. Okay, so I think we have done this paper. अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, Meenakshi uses the two lenses A and B along with the two C and D surfaces. Okay, she is able to see the subject matter on the blackboard while sitting on the front of the paper. चलो ये वाला जो क्वेश्चन है अभी, आर यू हैविंग अ फिजिक्स क्लास? 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद है फिजिक्स क्लास। ओके, so since just a minute, let me call to this Learnivio team. Just a minute.